Audio video clear achi guys? Yeah. So, hello everyone. I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me, how are you everyone? Ma'am, now all good. Thanda nahi to aji. Kali to aji thanda kam hi achi. जल्दी जल्दी कनेक्ट हो so that मु क्लास स्टार्ट करिबी. Before that कहि दोची ऑलरेडी आपण माने जानि चंती ऑफर एंड हेबार थिला बट ताकू टिके टेक्निकल ग्लिच रहितिला जति पय कि बहुत संख्या रे पिला मानकर क्वेरी आस्तुला हम ऑफर रे जॉइन करिया पय सेति लागि 4-5 डेज ताको एक्सटेंड करा जाई छी. ओके तो 2999 आपनकर बैच प्राइस जोटा कि ड्रॉप हेसी महापैक रो प्राइस तो आपण माने आपको जॉइन करि पारिबे. अपार्ट फ्रॉम दैट देखंतु वन डे एग्जामिनेशन रा आपनकर सबु सिंगल जदि स्पेसिफिक कोन से बैच नौ जंती सेटा भी ड्रॉप हे जाई छी. आपण जे कोन सेटा चाहिले जॉइन करि पारिबे हैला. कोन सब एमती आसी पचार छ मत लागु छी मुझे पूरा हॉस्पिटलाइज हे जाईथिली. भलो तो अछि ना. अच्छा तो सिविल सर्विसेज पय जदि आपण माने प्रिपरेशन करू छंती ओसीएस प्री आपण माने नै परिबे ओनली 5499 रे. जदि आपण माने प्री प्लस मेंस नेबा को चाहू छंती जोटा हमर बैच थिला 11999 रे ताको आपण माने नै परिबे 9999 दैट मींस ओनली 10000 रे. एंड जदि ऑप्शनल बैच आपण माने नेबा को चाहू छंती देन सेटा भी ड्रॉप हे जाई छी ओनली 3999 रे आपण माने दीटा ऑप्शनल पेपर भी पाइ पे. चलो तो नेक्स्ट कौन अच्छी देखो टीचिंग एग्जामिनेशन पाई जो स्टूडेंट्स माने प्रिपेयर करूछंती टीजीटी द्रोण बैच आपण माने जॉइन करि परिबे 1499 थिला प्राइस एबे ड्रॉप हे कि 1299 ही जाई छी. एंड जेटी 1199 प्राइस थिला एबे से भी ड्रॉप हे कि 999 ही जाई छी. मैम भलो अछन प्रहलाद अब भलो अछि को कोन कोंदी तमरा संबलपुरी लैंग्वेज रे भलो अछन ना ना भलो अछि. अरे भलो अछि मु सेमिति ही कहबी. आसो आसो डेली कांजी तरकारी खाउछ कांजी तो कांजी कांजी रा पुनी तरकारी केमती हैला रे कांजी तो इटसेल्फ ए कांजी. आसो तो फर्स्ट क्वेश्चन तम मानक पय व्हाट इज द अरेबल ट्रैक्ट इन ओडिशा. जते बेले क्वेश्चन तम मानक पचारिबो अरेबल ट्रैक्ट व्हाट डज इट मीन कहिलो राइट आंसर दियो आगो देन आमी जिबा. आज 50 टा क्वेश्चन अछि आगो कहि दोछि चिल्ला चिल्ली करिवनी क्लास टिके लेट हबो एंड ट्यून हे कि रहिबो. 50 क्वेश्चंस आज अछि जमा तरतर हबनी बिकॉज़ काली मु ओनली 15 टा या फिर 10 क्वेश्चंस करिथिली तो काली रे जो हाफ पोर्शंस थिला एटा मु एठी अटैच कर देछि. तो राइट आंसर कौन होची देखो ए नैरो बेल्ट ऑफ लैंड दैट लाइज along the coast and is covered with a tidal forest. A region of the state that is known for its rice production, a type of soil that is found in Odisha. देखो arable tract कथा कहितला माने सब बेले भाबिबो this is a type of tidal forest. कोन कहबा ना tidal forest हे मु कोन त मानकर कंफ्यूजिंग कर दोछि कि रो wait what is the arable tract in Odisha a narrow belt land अच्छा हां right. So a region of the state that is known for its rice production that is option B. Okay. Asa sorry for the inconvenience. So a narrow belt of land that is lies ताको हमें कौन कहि परिबा that is not the arable land what हमें कहि परिबा the mangrove or the tidal forest. सबु बेले जते बेले आपण मानकु tidal कथा पचारिबो whenever the question is asking about the tidal that means related with the mangrove forest. That means what na hentala bonna ताकू आपण माने रिलेट करेई पारिबे. हां रे बाबा भी ठीक अछि स्पेशली हमें कहि परिबा इन द एरियाज लाइक द भितरकनिका रीजन महानदी डेल्टा ए रीजन रे आपण माने को देखिबा को पाइबे. बट जते बेले कहूची रीजन ऑफ द स्टेट दैट इज नोन फॉर इट्स राइस प्रोडक्शन ताले अरेबल ट्रैक्ट सहित राइस प्रोडक्शन रे कोन लिंक रहिची
Now the reason state Odisha is known for its rice production, that you know, and the arable tract of Odisha refers to the fertile agricultural land. So arable means आपण माने कौन बुझिबे? This is a fertile agricultural land. Fertile agricultural land. ताको मन रख परिबो, and that एटा आपण माने को presently कोठी देखिबा को मिलिबो, that mainly a river valleys रे deltaic region रे एउडा करे आपण को Arabic tract देखिबा को मिलिबो. राधे राधे समस्त को राधे राधे. क्लास स्टार्ट हे गलानी, तो जो माने आसु तो टिके दया करी कि चुपचाप हे कि क्लास देखो, मझरे तेले मु ब्रेक नेबी त मानकर हालचाल पछिबे हैला. होप माइंड करिवेनी आपण मानकर टिके ईगो आजिकली अधिक हे गलानी, तो टीचर मानकटू तुम मानकर टिके ईगो अधिक हे गलानी, सेति लागि त मानकु कहूची. आसा, सो ए टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फाउंड इन ओडिशा. ओडिशा रे आपण मानकु जदी कहबा आमे देखुची एलुवियल सॉइल भी देखिबा को मिले, एंड आपनकर मोस्टली जदी कहबा रेड सॉइल आपण मानकर देखिबा को मिले ना नै मते को. ओडिशा रे आपण माने कहबे एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ए चारिटा कॉमन आपनकर देखिबा को मिलंती. एंड द अरेबल ट्रैक्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज अ टाइप ऑफ कोन लैंड आमे कहि परिबा. एंड ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज, हां एठी आपण माने लिखि दियंतु न, पुनी परे कहबे कि मैम हमको काहे लिखिलेनी, परे कंप्लेन आसुची कि मैम खाली कहि दोचंती काहे लिखु नांती, मोठो अधिक मते काहे लागुनी कि लिखौथिबे बोली. स्टिल आसा, तो कोन रहउची ना, दैट इज एलुवियल सॉइल. एंड मोस्टली आपण माने करो ओडिसा रे देखा जाउची दैट इज रेड एंड येलो सॉइल. ओके, लैटेराइट सॉइल and another is the black forest. आपण माने करो देखिबा को मिले black forest, black soil. Clear? एतिकी जिंस जानि परिबो, that is black soil is very limited areas रे देखिबा को मिले, rest all are very important. and mostly जदी को जो कोन देखा जाय, the red and yellow are most. Okay, next iba, next a type of forest that is found in Odisha. Odisha ra forest type already mu त मानकु कहि देइसी कोन. Odisha has a diverse forest. कोन अछि? Tropical moist deciduous forest, tropical dry deciduous forest and mangrove forest. जदी को हला ओडिसा रे केते टाइप रो फॉरेस्ट देखा जाए, ताहाले आपण माने एठी ऐड करि परिबे कि व्हाट. नाउ वन इज द ट्रॉपिकल, शॉर्टकट लिखुची त माने फुल फॉर्म लिखिबो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड आपनकर रहउची मैनग्रोव फॉरेस्ट. ए तीनटा आपनकर करेंटली ओडिसा रे देखिबा को मिले. ऑल आर क्लियर? चलो नेक्स्ट. So next question mate ko, what is the primary characteristics of the arable tract that contributes to its significance in agriculture? The primary characteristics जदि हमें देखिबा कोन हबो राइट आंसर मते को. क्विक ना tidal flooding, high salinity content, rich alluvial soil or extreme temperatures. कोन हबो राइट आंसर? क्विक. ऑप्शन सी समस्ते मारुछ. कहार सबुटो हाईएस्ट जोटा ऑप्शन आसीयो मु सेटा को राइट बोली क्लिक करबी, ताकू लॉक करबी, तापर तम मानको भाग्य रे जति पैसा बाहरला को. ऑप्शन सी, लेट्स चेक योर आंसर. द राइट इज आपनकर ऑप्शन सी. द arable tract is described as the granary of a state in such known for its significant agriculture productivity that is rich in the alluvial soil. That means हमें कोन कहउचे ना, rich in the alluvial soil, that is the arable tract. जदि फर्स्ट ऑप्शन देखो टाइडल फ्लडिंग होइची, दैट मींस व्हाट, एट द रेट चुप रुहा, एमती मजाक करंतिनी. आसा, सो टाइडल फ्लडिंग कहले कोन बुझुछो, दैट ऑकर्स इन द कोस्टल. टाइड कोठी आसे, कोस्टल एरियाज रे आपनकर आसे, तो कोस्टल फ्लडिंग रे ही आपण माने कहि परिबे, कोस्टल एरियाज रे आपण माने याकू देखिबा को पाइबे टाइडल फ्लडिंग ओनली. कोस्टल एरियाज हेला, डेल्टाइक एरियाज हेला, तो ई सब आपण माने देखिबा को पाइबे. दैट कॉजेस तो हमें कहि परिबा वाटर लॉगिंग एंड द सैलिनिटी, दैट कॉजेस. ओके, एट द रेट एटा तम मो भीतर कथा ना, लाइक कालो ठारो कालो मा जाने, तो जण तुम टिके चुप हेसा. ओके, आसा, तो हाई सैलिनिटी कंटेंट, तो हाई सैलिनिटी कंटेंट को हमें कोन कहि परिबा, दैट कॉमन इन द कोस्टल सॉइल्स. तो सैलिनिटी कंटेंट आपनकर कोठी मिलबा, सलाइन वाटर, लुणी पानी. ओके, तो लुणी पानी रु आपनकर माटीटा से पाखा पाखी सॉइल जहां भी देखिबो लुणी आसीबो, तो सैलिनिटी आपनकर ये भी आपनकर कोस्टल रीजन रे आसी जीवो.
देन एक्सट्रीम टेम्परेचर डिसअलुवियल सॉइल तो ऑलरेडी आपण माने जानिले बट एक्सट्रीम जदि आपण कहिबा टेम्परेचर्स कोठी आपण माने देखिया को पाइबे या एंटोलिना हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू ओके तो एक्सट्रीम टेम्परेचर आपण माने कहि परिबे ओडिसा रो जते भी क्रॉप आपण माने देखुसंती दैट कॉज the crop stress and low productivity and ओडिसा जदि हमें देखिबा एक्सट्रीम टेम्परेचर रे नाही बट या बदला हमें कहि परिबा ओडिसा को टेम्परेचर रे आसु ना मॉडरेट टेम्परेचर रे आसु हना नाही को सो मॉडरेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ओडिसा has that is not जदि एक्सट्रीम टेम्परेचर कहिबा that is not favorable for any agriculture clear चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहिबो during which natural phenomenon in Odisha do the leaves cover a large tract of land affecting human as well as animal life in the arable tract quick अच्छा मो क्लास तमन को एते भल लागे गला धन्य हे गली आस को कोन कहिबा ना ड्यूरिंग व्हिच नेचुरल फेनोमेनन इन ओडिसा तो दल हाई विंड्स कथा कहूची हाई विंड्स कथा कहबा that is caused by the cyclones and storms जते बेले आपनकर पवन बहुत बेगरे केते बेले बोहिबो जते बेले साइक्लोन आसीबो और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आसीबो तो साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स को हम रिलेट करे परिबा राइट अर्थक्वेक आसीला तो अर्थक्वेक हम कोन कहि परिबा को मते अर्थक्वेक very rare in Odisha that causes a minor ground shaking केबे हमर ओडिसा रे हेतिला लास्ट बोधि मु गोटे स्कूल ले पढुतिली ना कोन स्कूल या फिर प्लस 2 टाइम रे पढुतिली माइनर अर्थक्वेक गोटे देखिया को मिलिथिला आफ्टर दैट कोइ परिबा द हाई फ्लड यस ओडिसा इज अ फ्लड कोन a flood affecting region that is caused by the heavy monsoon rainfall and the cyclones and Odisha ro cyclone ro favorite address होची ओडिसा अच्छा हाउ आसा द ड्रॉट ओडिसा रे देखो ड्रॉट कंडीशन वेरी रेयर एबे as of now हमें कहूचे ड्रॉट कंडीशन रेयर हे जाईची बिकॉज़ दैट इज कॉज्ड बाय द रेनफॉल डेफिशिएंसी एंड सेटा केवीके रीजन ने बहुत ही रेयर देखिबा को मिले दैट इज लीड टू द क्रॉप फेल्युअर्स एंड द वाटर स्कैरसिटी एंड एबे आपनकर केनाल इरिगेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग हे गलानी तो ओडिसा रे आगो फलिया आपनकर ड्रॉट कंडीशन देखिबा को मिले क्लियर 2007 रे नाही आहुरी मु माने आउट के परे हेतिला आई थिंक 14 15 भीतर हेतिला मते को द अरेबल ट्रैक्ट ओडिसा दैट इज राइट आंसर व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द अरेबल ट्रैक्ट इन ओडिसा ड्यूरिंग हाई फ्लड जते बेले अरेबल ट्रैक्ट कथा कहूची दैट मींस कोन कहूची आपनकर लैंड कथा कहूची कल्टीवेशन लैंड कथा कहूची ओके तो ड्यूरिंग हाई फ्लड आपनकर कंडीशंस कोन आसे ए ऑप्शन बड़ अछि सो ताकू क्लिक करिबा high flood cause rivers to overflow in Odisha arable tract that is what option D कौन आसी option D that is all of the above that is levees covering a large tract of land affecting human and animals life damage to crop and infrastructure also because arable tract को ही तो मन को relate करे लिखा सहित ना अपन तो agriculture means crops loss of livestock that यदि आपनकर क्रॉप तो लॉस हो तो इनडायरेक्टली आपनकर लाइफ स्टॉक ऊपर से अफेक्ट पड़िबो तो कहि परिबा कि द फ्लड वाटर स्प्रेड ओवर द लीवीज एंड फ्लड पेन्स तो जेते सब लोक जनबसती जगह रे हमें कहि परिबा लीवीज एरिया को आपनकर जाउची एंड सबमर्ज्ड हो जाउची द लार्ज एरियाज सो हमें कहि परिबा स्टैंडिंग क्रॉप्स हैला स्पेशली आपनकर फैडी सीजन्स रे सेगुडा सब नष्ट होची हमर होना नै सो दिस ऑल आर तो इफेक्टेड नेक्स्ट मते कहबो which of the following natural phenomena helps replenish the fertility of the arable tract what will be the right answer it is volcanic eruption periodic river flooding that is earthquake that is droughts what will be the right answer volcanic eruption katha kahichi right sorry देखिबा which of the following natural phenomena helps replenish the fertility of the arable tract कौन हे परिबो वोल्केनिक इरप्शन त केबे भी होबनी हने नै को वोल्केनिक इरप्शन सहित दूर दूर तक किछि नाता ही नाही बट पीरियोडिक रिवर फ्लडिंग दैट कैन बी तो देखिबा वेरी गुड सो दैट इज द पीरियोडिक रिवर फ्लडिंग तो वोल्केनिक इरप्शंस आपनकर कोन चेंज करे यस बाघ यू आर ऑलरेडी इन द क्लास
एते सफिक्स प्रिफिक्स लगे कि कुहनी बुझिलो हम घर लोक भी क्लास देखुचंती काई ओडे मो पछे लागि जो आस So the volcanic eruption is the release of molten magma. आपण माने जानिछन जोटा को हमें लावा कहूचे even the ash हला and the gases ए सब आपनकर लाइक अर्थ रो इंटीरियर रु अर्थ रो इंटर माने इंटरनल सरफेस रु आपनकर बाहर को बाहर ऊपर को कोन माने दे होउछ क्लास रे चाकरी छाड़ दे पड़ियो तुम माने भाई बुझला so next but volcanic eruption it occurs only the movement of the tectonic plates okay kebe हुए na movement of tectonic plates and eta कोठी हुए eta मने रखो eta inside the surface inside the earth surface next question को जीबा चलो where is the sub-montane tract situated in relation to the other tracts of the southern coastal plains in Odisha? That is east, west, north or south. What will be the right answer? आम घरे कौन खाली मो मामा चले के नांती अच्छा कौन हम राइट आंसर क्विक देखो जते बेले क्वेश्चंस आसुची सब माउंटेन ट्रैक्ट तो सब माउंटेन्स मींस कोन आपण माने फास्ट बुझी दियंतु द सब माउंटेन मींस आपणकर फुट हिल रीजन दैट मींस आपणकर सपोज एटा आपणकर कोन पहाड़ एरिया हैला तार तळ रीजन टा को हमें कोन कहूचे द फुट हिल रीजन को हमें कहूचे सब माउंटेन ट्रैक्ट ताकू ही हमर कोन कहूचे ना सब माउंटेन ट्रैक्ट बोली कहूचे clear so in Odisha this tract lies at the base of the eastern ghat the right answer kon asio north kon मन इच्छा का हिंदी आंसर मार sorry so what is option B where is the sub mountain tract situated in relation to the other tracts of the southern coastal plains in Odisha acha southern coastal सहित कहिछि right so that is the northern sorry southern कहूछि आपनकर western right asa गोटे मिनिट रहिला ऑप्शन बी ईस्ट रे हेले आपनकर ट्रैक्ट हां ठीक अछि ईस्टर्न घाट तार ऑपोजिट रे आपनकर वेस्टर्न घाट हबो राइट दैट इज राइट आंसर आपनकर कोन हबो ना वेस्ट बोली कहिबा बिकॉज़ ईस्टर्न घाट आपन मान जानि संती इट फॉर्म्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन आपनकर कोन ना कोस्टल प्लेन एंड आपनकर ईस्टर्न घाट हाईलैंड ऊपर तो ईस्ट एंड वेस्ट भितरे जो ईस्टर्न घाट रो हाईलैंड आपनकर प्रेजेंट रहउची कोठी सपोज दिस इज द कोस्टल प्लेन तो कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न घाट रो हाईलैंड भितरे आपनकर स्क्रीन ब्लर होउची की शिट आई जस्ट फॉरगॉट चेक करो टिके आई थिंक एबे ठीक थिबो ऑल क्लियर आसो तो ईस्ट हमें कौन कहूचे ना देखो ओनली ईस्ट काहे कि हमें कहिबानी बिकॉज़ द ईस्टर्न साइड ऑफ द साउदर्न कोस्टल दैट प्लेन डायरेक्टली फैक्ट्स विथ द बे ऑफ बंगाल टोटल आपनकर बे ऑफ बंगाल से अटैच हेक अछि जोटा कि इंक्लूड करबा आपनकर कोन ना कोस्टल डून्स माने कोस्टल सैंड डून्स जोटा आपनकर अछि ओके एंड द बीच एंड द डेल्टास ए मानकु से कोन कवर अप करबो बट द सब माउंटेन ट्रैक्ट डजंट लाई नियर द सी दैट इज कोन including the coastal plain but the central tableland हमें कहि परिबा तो वेस्ट काहे कि हबो बिकॉज़ ईस्टर्न घाट लाई टू द वेस्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन तो कोस्टल प्लेन रो वेस्ट को आपनकर ईस्टर्न घाट रहिबो पिला माने बहुत थरा कंफ्यूज होंती कि ईस्टर्न घाट आपनकर ईस्ट रे रहउची बोली मारि दियंती बट ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन रो वेस्ट रे प्रेजेंट हुई जोटा कि हमें कहि परिबा जेंटली कोन ना स्लोपिंग टू द फुट हिल्स आपनकर थाई and laterite soil red and laterite soil तार कोन beneath रे आपण माने देखिया को पाइबे क्लियर चलो नेक्स्ट मते को व्हाट इज द सब माउंटेन ट्रैक्ट इन ओडिशा ओडिशा रे सब माउंटेन ट्रैक्ट देखो बार बार एई टाइप रे क्वेश्चंस आसीबो एंड आपण माने कंफ्यूज हेबे बट कंफ्यूज न हेबा पई मो क्वेश्चंस आनुची बार बार रिवाइज हे गले आपण मानकर फंडा क्लियर हे जिवो स्टिल जदि आपण माने न करिवे मो कोन करिवि थोड़ी ना बाटी की पियाई देबी आसो
What is the sub-mountain tract in Odisha? Sub-mountain tract in Odisha कहले कौन बुझुछ? That is quick. That is a narrow belt of land that lies. Option A, option B, option C, option D. कौन कहूछ? कोडा right answer हबो आपनकर? Yes, that is a meeting zone of the Arable tract and the simulation of the Eastern Ghat. That means हमें कौन कहि परिबा ना sub-mountain tract lies at the foothill of the Eastern Ghat. एबे diagram करके देखैली and it forms the transition zone between what? The fertile coastal, Arable plain, hilly Eastern Ghat and आप हमें देखुचे gentle spaces माने gentle slopes है कि आपनकर थाए through कौन route to आपनकर सरफेस पर्यंत सुदो माने एमती गोडानी हे कि आपनकर थाए सो रेड एंड लैटेराइट सॉइल भी आपनकर देखिया को मिले इवन मिक्स्ड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट कवर भी आपन माने सेठी देखिया को मिलंती हैला जोना नहीं चलो नेक्स्ट को मते व्हाट जियोग्राफिकल फीचर डज द सब माउंटेन ट्रैक्ट प्राइमरीली इंटरैक्ट within the southern coastal plains of Odisha राइट आंसर दिया मते यार क्विक right answer. So what geographical feature does the sub-mountain tract primarily interact with the southern coastal plains of Odisha? Plateaus, deltas, Eastern Ghat or alluvial plain? Right answer कौन आछि? Eastern Ghat. Option C. तो C आपनकर Eastern Ghat. Clear? So जदि plateaus हमें देखिबा तो plateaus माने कौन? मते को what do you mean by the plateau? तो plateau हमें कहि परिबा कि this is a elevated flat area. Usually हमें कहि परिबा that is higher than the surrounding land. आपनक भितरे जति कि माने आपण माने चळ प्रचळ करूछन जो सराउंडिंग लैंड ताठू जस्ट टिकी हमर कहि परिबा हाइट रे थिबो बट दैट इज आल्सो फ्लैट लैंड so that is a plateau is an elevated flat area usually higher than the surrounding land एतिकी जिंस मन रखि परिबो इवन हमें कहि परिबा जते बेले हमर सी लेवल रेंज होउची हमें कहि परिबा दिस इज अ डिफरेंट plateau usually have step साइड साइड है कि आपण माने देखिथिबे सी लेवल रे जदी YouTube रे जाई कि डायग्राम भी खोजिबे ताहाले सरफेस रु आपण माने सी लेवल एमिति हे कि जाउथबो सपोज एठी आपणकर 200 मीटर देन आसीबो 500 मीटर देन आसीबो 1000 देन आसीबो 5000 अप टू 10000 आपण माने जाई परिबे विनीत जोठी आपणकर टाइटैनिक जाई कि बुडीथिला इवन 10000 भीतर को जदी आपण जाउछंती एवरेस्ट को जदी आपण उल्टा भी बुडौछंती ताहाले भी तार आपणकर 100 समथिंग किलोमीटर आपणकर रेस्ट रहि जाउची तो सी रो डेप्थ आपणकर रहउची तो प्लेट्यू हमें कोन कहबा द डिफरेंट रीजन जते बेले एठी के आसीले ए रीजन ता रहउची गोटिए प्लेट्यू एटा भी गोटे प्लेट्यू एठी के आसीले आ गोटे प्लेट्यू देन ऊपर के आसीले आ गोटे प्लेट्यू एंड सरफेस रे आपणकर आसी जीव आ गोटे प्लेट्यू सो दीस ऑल आर द लैंड सरफेस हमें कहि परिबा तो राइट आंसर कौन होची ना ईस्टर्न घाट एतिक जिंस मन रहिबो ओडिसा रे हम जदी देखिबा कोन प्लेट्यू कहिले ओडिसा रा प्लेट्यू छोटनागपुर प्लेट्यू रा गोटे पार्ट ओडिसा हैज पार्ट्स ऑफ द छोटनागपुर प्लेट्यू एक्सटेंडिंग कोठी की ना ईस्टर्न घाट पर्यंत ये एक्सटेंड करिछि एते ओडिया भी लेखनी हां आसा सो नेक्स्ट मते कहइबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज faced by the sub mountain tract in Odisha मते को sub mountain tract Odisha रे कोन चैलेंज फेस करे क्विक what will be the right answer quick ask कहछि soil erosion deforestation both of these or not जदी हबो both हबो जदी हबो नन हबो या भीतर गोटा को त मानु को ऑप्शन देली कोन कहउछ तमे सब माउंटेन ट्रैक्ट आपनकर सॉइल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन बोथ हुए वेरी गुड आसा तो कोन हे जाउची ना बोथ ऑप्शन राइट हे गला तो सॉइल इरोजन माने कोन बुझुचो सॉइल इरोजन व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन तमे कहि परिबा कि द वेयरिंग माने कोन द वेयरिंग अवे और रिमूवल ऑफ द टफ लेयर ऑफ द सॉइल केमिति हुए ना बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक द वाटर एंड द विंड or by any kind of human activities जते बेले भी टफ लेयर आपनकर कोन ना सॉइल टा ऊपरु दूर हे जाए या फिर आइदर पानी रे पवन रे या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज हमें चला चली कला बेले पळुची देन हमें ता कोन कहूचे दैट इज द सॉइल इरोजन और नहीं
तो डिफॉरेस्टेशन कहले तो माने अगेन कोन बुझुछ द लार्ज स्केल clearing or the permanent removal of the forest and the trees to कोथि पाई ना to repurpose the land for other uses like हमें कहि परिबा फार्मिंग पाई हैला कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग हैला या फिर ह्यूमन रो नीजर यूजेस पाई तो ताको हमें कहउचे डिफॉरेस्टेशन जते बेले परमानेंटली रिमूव कर देउची माने हमर कोन ट्रीज को एंड सेटा कोथि ट्रीज विद द लैंड रे थिला ना तो ताको हमें कहउचे दैट इज द रिपर्पस यूज गोटे पर्पस आपनकर फॉरेस्टेशन थिला तले डिफॉरेस्टेशन होउची ताको रिपर्पस रे हम यूज करूची am I clear next question चलो now what kind of natural vegetation is typically found in the submontane tract of the southern coastal plain तो natural vegetation आपण माने देखियो को पाइबे को जगह मते को टाइप रो देखो dense tropical forest these forests are mainly कोन हबो and these are high rainfall oriented and high कोन अल्टीट्यूड रीजन्स रे आपण माने को देखियो को मिलिबो समहाउ हमें कहि परिबा वेस्टर्न घाट रे हबो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रे हे परिबो लाइक इंक्लूड हमें कहि परिबा कोन एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट इंक्लूड एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कोडा डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रासलैंड हेले कोन बुझुछ मते को देखो dense tropical forests are not the coastal or the submontane transitional vegetation that is a north eastern region और हमें कहि परिबा very northern region को हमें रिलेट करि परिबा grassland कहले हमें कोन कहि पारुचे ना region with a low rainfall that areas affected कोन overgrazing हैला deforestation हैला ता द्वारा एटा अफेक्ट हे परिबो है ओके तो ग्रासलैंड कहले हमें कोन कहउची ना लो रेनफॉल जो एरिया रे हबो ताको हमें कहि परिबा दैट इज ग्रासलैंड देन thorns and the stunted shrubs to sal forest is that true याको हमें रिलेट करि परिबा कि होना नहीं मते कुओ thorns and देखो साल कहले माने तमे छोटो बेलु ही साला गछ कथा सुनिथिबो सो सब mountain tract कोन हबो ना foot of the eastern घाट हमें कहि परिबा that forming a transitional zone हमें कहि परिबा कि ये related with कोन tropical moist deciduous forest जोटा कि ओडिसा रो टाइप क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आसा तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही मजा लागिवो माने फाजलामी न करी कि टिके सीरियस है कि क्लास को देखो हैला फर्स्ट कोन कहला ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके about the Arable tract in Odisha Arable tract Odisha विषय जहां भी कहली ए सेंटेंस को नेकी मते लिंक करी कि राइट आंसर दरकार क्लियर फर्स्ट कोन कहिछि देखो ना इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट as far as agriculture is concerned it is the lowest part की all अछि जय all at the rate बसते बस एमती देखि कि आंसर दियंतिनी रे ठीक है लॉजिक वाइज जाओ तो स्टेटमेंट 1 अपन कोन होछि इट इज द लोएस्ट पार्ट कहिथिली कि Arable tract refer to the fertile agricultural land mainly in the river valleys and the flood plain so ये अपन को ऑप्शन टा एलिमिनेट हे गला then asila it consists of levees that means the embankments built to the prevent overflow of a river is that true ये अपन को राइट आंसर हबो कि स्टेटमेंट 2 अपन माने कोंतु मते Arable tract is formed by the river action that you know महानदी हेला अपन को कोन ब्राह्मणी हेला बैतरणी हेला सुवर्ण रेखा हैला ई समस्त को हम रिलेट करि परिबा इवन नेचुरल लिवीज दिस इज अ वेरी कॉमन फीचर्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स तो भी आपन को फ्लड प्लेन्स अछंती जनबसति सेठी अछि सो दैट इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द फ्लड्स तो ऑप्शन 2 आपन को एठी राइट हे गला इट इज होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द बर्ड्स तो ये कोन राइट आंसर क्विक ये राइट आंसर की मते को वाइल्ड लाइफ रिच एरियाज आर मेनली को जगह हबो ना फॉरेस्ट हबो वेटलैंड्स हबो मैंग्रोव्स हबो सैंक्चुरीज हैला एगुडा को हम रिलेट करि परिबा सो ये भी एलिमिनेट हे गला ओनली 2 ऑप्शन इज राइट केमिति रिलेट करिवो कहि देली बाकी तम मानकर इच्छा क्लियर नेक्स्ट चलो मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉल्ट ट्रैक्ट तो सॉल्ट ट्रैक्ट इतले पचारछि ताकू अकॉर्डिंग आंसर देबा फर्स्ट ऑप्शन कोन कहिछि आसा it is covered within tidal forest is that true it is covered within tidal forest
ओडिसा रे टाइडल फॉरेस्ट रे आपनकर कोन देखा जाय टाइडल मींस आपण मानकू कहितिली मैंग्रोव होना नहीं तो टाइडल मींस आपण मानकू कोन कहितिली इट इज ऑल अबाउट द हेंताळ वन मैंग्रोव फॉरेस्ट दैट इज ऑकर्स इन द डेल्टाइक एंड द एस्चुआरीज एरियाज दैट मींस आपनकर भीतर कनिका को एग्जांपल ले परिबे क्लियर सॉल्ट ट्रैक्ट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट ना सॉल्ट रो आपण माने सलाइन वेटलैंड ले जिबे सो एठी तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हे गला then it contains the saline soil देखो salt कहला माने saline water then आपनकर saline soil तो contain करिवो ही तो ऑप्शन 2 आपनकर एठी राइट हे गला then what's about option 3 it is suitable for agriculture saline water आपनकर saline soil केतेबेले agriculture purpose रे suitable हेसी कि not at all so ये eliminate हे गला only 2 again incorrect that is the correct one then incorrect clear next चलो मते को consider the following statements about the Baleshwar plain all Baleshwaria please answer these asa the region is located in the rain shadow of eastern ghat of mountains is that true jaldi first kon kahila na the region is located in the rain shadow of the eastern ghat mountains right habo ki the region is located rain shadow yes or no option both answer de decha option both oops oh shit yaar what I did सब बेले एमती हे जाउछ ना कोटार आंसर हां तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कोन होउची तो ऑप्शन ए दैट इज बोथ 1 and 2 the region is located in the rain shadow of eastern ghat the region has a low water table and the region has a high population density एटा कोठे रॉन्ग प्रूफ करि देछि क्लियर चलो नेक्स्ट मते कुह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द चिलिका ऊपर टिके रिसर्च करिबा आसा मते कुह वेरी गुड इवनिंग मते कुह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द चिलिका लेक इज लोकेटेड ऑन द ओडिशा कोस्टल प्लेन्स चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट कोस्टल lagoon in India what will be the right answer quick जल्दी consider the following statements option कौन कहूची the Chilika lake is located in the Odisha coastal plains yes Chilika is the largest coastal lagoon in India the largest हे गले both 1 and 2 हे जिबो कि option C yes the Chilika lake is indeed located clear तो Chilika आपण करो मते कहिलो रामसर साइट रे केबे जाइथिला ईयर खाली कहि दे आगु जिबा रामसर साइट रे केबे Chilika ऐड हेथिला गिव मी द ईयर प्लीज देन वी विल मूव फॉरवर्ड वेरी गुड डोरेमन चलो नेक्स्ट मते को what percentage of the entire area of Odisha does the middle mountainous and highlands region cover quick which region को region को हम relate करू छे 1/4 half 3/4 1/3 option C 3/4 very good so the percentage apanakara 3/4 the middle mountainous and the highland region covers approximately 3/4 of the entire areas of Odisha next question in front of you which measure mountain speed jiba कारण जोड़ा करि सालेनी ऑलरेडी आपण माने आंसर पाइ जिबे जल्दी को which measure mountain range characterize the middle mountainous and highland region in Odisha जल्दी हिमालय से बिल्कुल हबनी हिमालय हेले नॉर्दर्न इंडिया पड़ला वेस्टर्न घाट अपन कर हबनी वेस्टर्न घाट अपन कर कोन ना गुजरात रो केरला गुजु रो केरला रिलेट कर दबो या कोइठी कोन एलिमिनेट कर दबो देन अपन कर रहला कोन ना वन एंड ओनली ईस्टर्न घाट विंध्य रेंज भी तो हबनी ईस्टर्न घाट ही अपन कर ओनली प्रेजेंट रहिबो एम आई क्लियर चलो विंध्य हेले अपन कर कोन मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन What is the approximate elevation range in the middle mountainous and highlands region in Odisha? Middle mountainous and highland region भितर आपनकर डिफरेंस केते रहइबो क्विक जल्दी जल्दी कुह जल्दी कुह मते the middle mountainous and the highlands region of Odisha is कोन moderate to high elevations आपन कहइबो not so peak high ओके तो moderate to हेले केते हबो 610 to 1068 एतिके हम रिलेट करे परिबा ऑप्शन बी वेरी गुड ऑप्शन बी द अप्रोक्सीमेट एलिवेशन रेंज ऑफ द मिडिल माउंटेनस एंड हाईलैंड रीजन इन ओडिशा माने मैक्स टू मैक्स आपनकर केते जाउची मैक्स टू मैक्स आपनकर केते जाउची ना इन बिटवीन एवरेज जदि हम नउचे 1068 मीटर ही जाउची
क्लियर चलो दैट इज द जनरल एलिवेशन रेंज हमें कहि परिबा क्लियर हिल रेंजेस हैला प्लेट्यूज हैला हाईलैंड हैला माने कोरापुट कंधमाल एरिया को जदी आपण माने जिबे नॉर्मल प्ले लैंड माने प्लेन लैंड रो आपण माने जदी टिके हाइट एरिया को जिबे त एलिवेशन डिफरेंस केते आसीबो मैक्स टू मैक्स 610 रो 1068 नेक्स्ट मते को द मिडिल माउंटेनस एंड हाईलैंड्स रीजन ऑफ ओडिशा इज अ पार्ट ऑफ व्हिच जियोलॉजिकल रीजन ये आपनकर को जियोलॉजिकल रीजन ना गोटे पार्ट मते कहिलो क्विक पेनिनसुलर इंडिया दैट मींस कोन ना ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल जियोलॉजिकल रीजन इन इंडिया आपनकर कहि परिबा सबटु ओल्डेस्ट जति हमकु कहिबा कोटा कहिबा ना दैट इज कोन होची ना पेनिनसुलर इंडिया जति आपनकु पचारिबो व्हाट्स अबाउट द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया दैट मींस कोन ना एक्स्ट्रा हे गले पेनिनसुलर जदी आपनकर ओल्डेस्ट हैला एक्स्ट्रा पेनिनसुलर आपनकर कोन हबो इट इज द यंगर वन देन द हिमालयस देन डिकल प्लेट्यू ओडिसा सहित आपन माने वन एंड ओनली कोन जानचंदी सॉरी कोन अछि अच्छा ओडिसा आपनकर ओल्ड लैंड हबो सेति पे आपन माने को पेनिनसुलर इंडिया सहित ही कंसीडर करिवे डिकन प्लेट्यू को हमें सबटु लार्जेस्ट बोली कंसीडर करूछे डिकन प्लेट्यू को हमें कहूचे द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द साउदर्न इंडिया दैट फॉर्म्ड मेनली कोथरे वोल्केनिक लावा फ्लोस ए थ्री हमर बनेछ क्लियर नेक्स्ट चलो so the middle mountainous and the highland region of Odisha is the part of the peninsular India next mate ko which rivers have cut deep and narrow valleys in the middle mountainous and the highlands region in Odisha quick the middle mountainous and the highlands भितर आपन को कोन कहइबो गंगा एंड यमुना इज नॉट एट ऑल बिकॉज़ आपण माने जानि संती इंडो गैंगेटिक प्लेन रे आपण कर ये पळे आसीबो so they do not pass through the Odisha eliminate हे गले गोदावरी एंड कृष्णा भी नुह नर्मदा ताप्ती भी नुह ये त आपण कर जाई कि अरब आपण कर सॉरी अरेबियन सी को पड़ी छी so one and only बैतरणी ब्राह्मणी महानदी no more explanation needed next question मते कुआ the middle mountainous and highlands region of Odisha is home to which of the following tribes this is the home extra peninsular सेटा हबो कि मैम नो प्रेटी प्रियंका you are so pretty but एटा आपनकर peninsular India हबो because peninsular means the oldest one and आपनकर उत्कल plain time रे आपनकर ancient time रे अछि हैला also so the middle mountainous and the highland regions of Odisha is home to which of the following tribes को tribes को हम एठी relate करूछे who can say it quick the middle mountainous highlands Kandha Munda Santhal it all of these अछि देई पड़िबो संगे संगे तम माने ताकि the largest tribe को सेले कोन कहउछो the largest tribe of Odisha की कहि परिबो quick largest tribe of Odisha जोटा कि कंधमाल रे आपनकर देखिया को मिलंती किए ना कंध डोंगरिया कंध हुंतु कुटिया कंध हुंतु बट मेजॉरिटी डोंगरिया कंध माने देखिया को मिलंती बोथ इन द कंधमाल कोरापुट एंड रायगड़ा रीजन रे आम आई क्लियर सांथाल कहले आपण माने कोठी पाइबे ना नॉर्दर्न ओडिसा रे आपण माने सांथाल ग्रुप रो लोक माने को पाइ परिबे को जागा रे ना नॉर्दर्न कहले मयूरभंज केउंझर एते शॉर्टकट रे लिखि देले जीवो कोन मयूरभंज एंड आपनकर केउंझर तो ए मानकर आपण सांथाल देखिया को पाइबे इवन द मुंडा जाति रो लोक मान को आपण कोठी देखि परिबे ना छोटनागपुर प्लेट्यू रीजन सहित से माने अटैच हे कि थांदी सम हाउ द नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया सहित आपण माने देखिया को पाइ परिबे नेक्स्ट चलो मते कुह द मिडल माउंटेनस एंड हाईलैंड रीजन ऑफ ओडिशा इज रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ओ मिनरल्स क्विक जल्दी the middle mountainous and the highland regions देखो iron ore से मानु कोन कहितली ना middle mountainous and highland region आपनकर आसीबो कोन iron ore bauxite and manganese ओडिसा रे आपनकर तीनटा जाको काफी पूरा भरपूर आपनकर अछि इवन जदी देखिबा कि iron ore कोठ अधिक अछि ना केउंझर अछि सुंदरगढ़ अछि मयूरभंज अछि these are the ores of the कोन mainly hematite हबो प्री कैम्ब्रियन रॉक रो आपनकर फॉर्म हिच तो एरिया पचले कोन मन रखिबो ना केउंझर सुंदरगढ़ ओके देन आपण मानकर कोन मयूरभंज ताको आपण मान रिलेट करि परबे आयरन ओर सहित बॉक्साइट सहित आपण मान जानि संदी कोरापुट पंचपटमाली हिल को रिलेट करि परबे आराम से कोरापुट हेला कोलाहांडी हेला रायगड़ा को हेला एटा को रिलेट करि परबे मैंगानीज हेला आपण मान जानि संदी आयरन ओर बेल्ट सहित ये मिसी कि थाए सेही केउंझर सुंदरगढ़ रीजन रे आपण मान को मैंगानीज मिलि छ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आसो What type of landforms have the major rivers of Odisha created in middle mountainous and highland region? Quick.
हाँ मौसुमी तम कोरापुट What type of landforms have the major rivers of Odisha created in middle mountainous and the highland region? Quick, किए कहि परिबो? किए कहि परिबो? देखो आपनकर वाइड फ्लैट प्लेन हेले आपन को कहि परिबे that is very low gradient, that is the कोन plain areas where हमें कहि परिबा the rivers flow down, but हमें जदि कहिबा कि कोन ना deep and narrow valleys, option B, the major rivers of Odisha along with their tributaries flow through the middle mountainous and the highland region and have created a deep and narrow valleys as a result of active vertical erosion due to the steep slopes in the upper course of the rivers. So basically हमें relate कहा को करि परिबा ना deep and narrow valleys सहित relate करि परिबा because of the hard crystalline rocks, because of the steep slope in nature. So result रे हमें पाउचे deep narrow valleys and आपनकर somewhere in the गोंडो गुडा भी देखिबा को मिलुची. Clear? Next चलो मते को which of the following mountain ranges in Odisha are volcanic origin? को mountainous range को हमें कहि परिबा these are the volcanic origin. Quick, अरे बाघ आज पिला कोडे गले आसा सो व्हिच सिमिलपाल एंड मेघासिनी त आपनकर हबो नाही सॉरी सिमिल हबो नाही के कोछि रे ऑप्शन बी हां दैट इज द सिमिलपाल एंड मेघासिन बिकॉज़ ईस्टर्न घाट आपनकर हबोनी ईस्टर्न घाट आर नॉट द वोल्केनिक कोन ओरिजिन ओके दे आर मेनली मेड अप ऑफ द एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स हम कहि परबा ग्नेइस एंड द सीज कोन ग्नेइस. Next मते को what is the range of the elevation for the Similpal and Meghasini mountains in Odisha? इत्ता पे आसुना काली आसीथिले यार एमती काई कहउछ आज कोन हेला बस what is the range of the elevation for the Similpal and Meghasini mountains in Odisha? 500 meter to 800 meter, 800 to 1200 or what? केते कहि परिबा एलिवेशन कथा पचारि छी जल्दी. ऑप्शन डी 600 टू 1050 काहे की एठी तो पूरा मेंशन कर देछि सिमिलपाल एंड मेघासिनी कथा. सिमिलपाल एंड मेघासिनी कथा जते बेले कहियो सेते बेले 800 टू 1200 मीटर को अपन माने जिवे हन तो सॉरी रुह टिके तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द एलिवेशन फॉर द सिमिलपाल एंड मेघासिनी माउंटेन्स इन ओडिशा उतर ताको चेक करि देबा. ओके सिमिलपाल हिल आपनकर केते आसीबो मते को सिमिलपाल हिल आपनकर ऑलमोस्ट हमें कहि परिबा कि 900 रु 1100 मीटर को जिवो बोली. यस देन आपनकर मेघासिनी हिल भी सेही 800 टू 1200 को जिवो तो 800 रु तो आपनकर 1200 भीतर ऑप्शन बी राइट अछि. ठीक अछि आपनकर ऑप्शन बी ही हबो एटा भूल से दिया जाई छी ताकू एलिमिनेट कर दबो एठी हम लिखि दोची बी. Next चलो which of the following is the highest peak in the Similpal hill range? तो मते कहला highest peak आपनकर Similpal hill range रा कोउटा रहिबो नियमगिरी और द खैरीपुरी 1147 माने पूरा हाइट सहित लिखि देछि. तो राइट आंसर आपन मानक ऊपर केते देबे. इवन मेघासिनी 1672 मीटर, महेंद्रगिरी 19941 मीटर. स्टिल क्विक ऑप्शन सी आसुची अश्विनी. हां अश्विनी देखिले एते सारा लेखा है पुनी हाइट लिखि दिसंती मैडम तो निहाती मूर्ख हेतिबे से हाइट जदी ऐड करिसंती आमे काहे के चांस मिस करिवु आमे एठु देखि के लिखि देबु सी बोली आ कोन ना कि ए तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिकॉज़ नियमगिरी आपण जानिसंती कलाहांडी रायगडा ए डिस्ट्रिक्ट्स रे आसीबो हन नै म देखो जहार एलिवेशंस आपनकर ऑलमोस्ट आमे कहि परिबा 1150 approximately. Okay, this is not in the Similipal range. खैरीपुरी आपनकर कोन Similipal हिल रे आसीबो that is सी लेवल 1147 रे अछि. बाकी आपनकर मेघासिनी भी नाही मेघासिनी आपनकर देवमाली पाखे रे अछि कोरापुट रे कोठी ये आपनकर कोरापुट रे आपनकर मेघासिनी अछि. क्लियर. बाकी महेंद्रगिरी ऑलरेडी आपन माने जानिछंती कोठी गजपति डिस्ट्रिक्ट. क्लियर. सो याकू भी आपन माने एलिमिनेट करि देबे एग्जाम रे तो एम्ति क्वेश्चन आसीबो त माने बाया हे जिवो. तो अगेन कहूची महापैक रा प्राइस कमी गई छी 2999 अछि किछि कहबिनी बस तमनु कहबी गोटिए पैक नियो महापैक नियो दैट इज ऑल एग्जाम बाय एनफ दैट्स इट.
हैला देन काली तम मानकर 33 जाय क्वेश्चंस करि देइथिली सो एते के क्वेश्चंस तम मानकर स्किप करूछि मु बाकी 34 टू पुनी स्टार्ट करबा अभी जा यार here go so next question mate kuo nice class on time he gala अरे आहुरी अध घंटे जीव क्लास आस so the northern coastal plains of Odisha is also home to a number of important wildlife sanctuaries which of the following is one of the most popular wildlife sanctuaries in this region quickly mate कहलो कोन कहूची जते बेले important wildlife sanctuaries कथा कहिची ताहाले हम राइट आंसर वन एंड ओनली कोन मारिबा ना भीतर कनिका हुई मारिबा हन नै को सो भीतर कनिका कहिले हम कोन कहि परिबा क्विक सिमिलपाल हैला आपनकर सिमिलपाल कथा भी देखि दियंतु सिमिलपाल आपनकर कोठी आसीबो तई आपनकर नॉर्दर्न रीजन रे पळे आसिला हन नै मते को तो ये त आपनकर बिल्कुल हबनी भीतर कनिका इज द कोन कोस्टल प्लेन हम कहि परिबा एंड केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अछि सेति पे हम भीतर कनिका को ही नेबा तो मते को भीतर कनिका पाखकु जे त हम आछे बुलिबा पई तो मते कहि दियो टिके सब बेले आपन को क्वेश्चंस पचारु छी भीतर कनिका को नै कि मते कहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर डिक्लेरेशन हेइथिला को ईयर रे क्विक जल्दी जल्दी पूरा फास्ट कहबो मते को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेरेशन हेइथिला को ईयर रे क्विक तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिबी तापर मते कहबो क्रोकोडाइल कोन कंजर्वेशन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एक्ट और प्रोजेक्ट ये भी को ईयर हेइथिला जल्दी 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 पळे क्रिएशन माने दंडमुक्त अंचल हे जाई छी नहले एठो पिटले तमे सीधा दौड़ दौड़ी पळेबो yes that is 1975 both आपनकर 1975 रे बोली मने रखिबो एति के मने रखि परिबो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर ये जाई छी 1975 रे एंड आपनकर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सॉरी प्रोजेक्ट रे भी आपनकर 1975 रे जाई छी आउ गोटे मते कहिलो जो गहिर मथा आपनकर अछि हन नै त मते कहला गहिर मथा मराइन सेंचुरी एज ए सेंचुरी केबे हेसी क्विक गहिर मथा केबे डिक्लेयर हैला एज ए सेंचुरी गहिर मथा एज ए सेंचुरी केबे डिक्लेयर हैला 19 लिखि देई छी क्विक 19 ओ ओ भकते ओ दैट इज किए से 19 किए से कहला 1984 काहे कि 1984 रे जाकी चेक कलो 1984 रे केबे हिदिला क्विक चेक करो टिके 84 तले 97 रे कोन हेथिला मते को 97 रे कोन हेथिला नेशनल पार्क आपनकर 98 रे हेथिला गहिर मथा मते क्वेश्चंस दियो आंसर दियो तापर आपण माने को एज ए नेशनल पार्क भीतर कनिका केबे हेथिला ना 1998 रे हेथिला एज ए कोन ना नेशनल पार्क आफ्टर दैट जदि आपण माने को पछरा गला कि रामसर साइट रे केबे ये जाइथिला अंडर रामसर साइट ये केबे जाइथिला 2002 रे रामसर साइट रे ये जाइछि आउ गोटे इंपोर्टेंट मने रखो इको एबे रिसेंटली जाइछि इको सेंसिटिव जोन रे आपनकर भीतर कनिका 2017 मसिया रे जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करिछि द बाउंड्रीज ऑफ द इको सेंसिटिव जोन अराउंड द भीतर कनिका याकू भी रिलेट करो कौन से टाइम आउट मु बुझी भी पारुनी कहछ दीपू आई डोंट नो अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग आसा सो 2017 ने हमें कौन कहि परिबा ना इको जोन डिक्लेरेशन हेसी एटा मन रहइबो समस्तिंकर इको सेंसिटिव जोन जदि क्वेश्चंस रे आसीला ताहाले एटा को चूज करिवो गहिर मथा 97 रे मने रखिबो गहिर मथा 97 मु तो तुमको सेया कहूची तमे माने काई खालटारे रातिटारे बाउला होचो मु जानि भी परुनी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भीतर कनिका पर सब मन रहइबो त ना पुनी गड़बड़ करिवो आसो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स is the most important river in the northern coastal plain in Odisha Odisha रा northern coastal plain ना most important river हमें कहा को कहि परिबा northern कथा कहिला माने आपनका माइंड को कोन आसीबा दरकार मते को northern कथा कहिला माने both वाला ऑप्शन आसीओ भरी की
टाइम आउट माने से पिला कमेंट्स देले भी आउ शो करिवो नाही मैम से कोन कॉपी थिबो तो टाकू टाइम आउट अच्छा टाइम आउट इज ब्लॉक टाइप रो गोटे तो सेटा बैकएंड टीम क्लास जो माने रिव्यू चेक करूचंती विजिट करूचंती से माने करूचंती दैट इज नथिंग इन माय हैंड रे बच्चा आसा सो बोथ ए एंड बी को हमें राइट आंसर मारी परी बाकी या फिर ओनली सुबर्ण रेखा ना बुढ़ा पड़को को देलानी कारण बुढ़ा पड़को आपनकर मयूरभंज को पळे आसिला तो ये आपनकर सेंट्रल लैंड को एंड आपनकर कोन नॉर्दर्न लैंड मिसी की रहि जायछि सेति पय हेइनी ओनली ए विल बी द राइट आंसर ओनली ए दैट मींस ओनली सुबर्ण रेखा ओके द स्ट्रीक ऑफ गोल्ड ओरिजिन कोठ होईछि पिस्का नगरी विलेज मने पडुछि रांची छोटनागपुर प्लेट्यू मने पडुछि ना नहीं पिस्का नगरी विलेज ओके ओडिया रे केबे लिखिबार अभ्यास ही नाही ता बोली कोन लिखि परिबी छोटनागपुर विलेज सॉरी छोटनागपुर प्लेट्यू क्लियर जीवा नेक्स्ट ओके चलो मते कुह द नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स बालेश्वर प्लेन्स आर नोन फॉर देयर फर्टिलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द रीजन दैट इज व्हीट मेज सुगरकेन और राइस कौन हबो राइट आंसर क्विकली कुह राइट आंसर राइस देखो राइस को हमें कौन कहि परिबा राइट आंसर कौन हम राइस तो हम जाने छड़ राइस हम तो आस मते कुह जो हमर फास्ट रहउछि राइस ताको हमें कौन कहि परिबा दिस इज द रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप 25 डिग्री सेल्सियस रु अधिक तो रिक्वायर्ड होउछि दैट मींस रिक्वायर्स द हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी दैट्स व्हाई हमें कहि परिबा राइस को कौन एज अ खरीफ क्रॉप और नै को राइस को हमें कौन खरीफ क्रॉप कहि परिबा इवन जदि आपन को व्हीट पछरिला ताहाले हमें कौन कहि परिबा व्हीट को कौन कहि परिबा रबी और खरीफ ना व्हीट को हमें रबी क्रॉप कहि परिबा बिकॉज़ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस आपन करे रिक्वायरमेंट हुए लो रेनफॉल ले भी 15 to 75 सेंटीमीटर लो रेनफॉल ले हेइ जिवो व्हेयरएज आपन कर राइस पे दरकार 100 सेंटीमीटर रु अधिक तो मेज को हमें कौन कहउचे ना द क्वीन ऑफ द सेवंस कौन दिस इज आल्सो आपन कर खरीफ क्रॉप्स एंड आपको हमें कौन कहउचे ना क्वींस cereals that is the maize and sugar corn आपण मान जानि संदी that is the cash crop clear cash crop कहा को हमें कहउचे ना sugar cane को कहउचे next top producer किए sugar cane रे यूपी अंदो चल यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक रिलेट करी पारिबो मते को where are the middle coastal plains situated in relation to the quick where are the middle coastal plains situated in relation to the other two coastal plains of Odisha जल्दी रिलेट करके आंसर दियो the middle coastal plains are situated centrally acting as a geographical bridge between the northern and the southern coastal plains तो हमें कहि परिबा that is what this is right answer option A the middle coastal plain of Odisha the northern coastal plain and southern coastal plain को कनेक्ट करूछि नेक्स्ट क्वेश्चन मते को अच्छा अगेन त माने जानि छ ऑलरेडी 2999 प्राइस ड्रॉप हे जाइछि जो माने पर्यंत नै न कहूछि जल्दी नियो पछरे पुणी पस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच रिवर फॉर्म्स द साउथर्न बाउंड्री ऑफ द मिडिल कोस्टल प्लेन इन ओडिशा साउथर्न बाउंड्री कहिला मिडिल कोस्टल प्लेन कहिला कौन कहि परिबा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पळे आसला दैट मींस द लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा कहा को हमें रिलेट करि परिबा ऑप्शन सी सॉरी नॉट लाइफ लाइन एक्चुअली महानदी चलो साउथर्न हेले अपन कोन कहि परबे ना ऋषिकुल्या महानदी कथा कहिले त मानकर मने पडुछि कि ना 6 टा रिवर को नै कि हमर हेक्सा डेल्टा खि पारुथला कोठ ओरिजिन हेछि सिहावा माउंटेन धमतरी डिस्ट्रिक्ट रो आपनकर ओरिजिन हेछि छत्तीसगढ़ टोटल लेंथ पचाले 858 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 494 किलोमीटर ओडिसा रे से फ्लो करिछि एंड आपनकर कोन सेवनाथ हेला हंसदेव हेला मन हेला ईव हेला जोंक हेला तेल हेला एंड आउट कोन हेला ओंग हेला ए सब आपनकर ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी क्लियर
एंड आपण जदी डिस्ट्रीब्यूटरीज देखिबा तो काठजोड़ी हैला, कुआखाई हैला, देवी हैला, दया हैला, भार्गवी हैला, these all are the कोन डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ऑफ द महानदी एतिके माने अछि। एंड जो देखिबा हीराकुद डैम आपनकर महानदी ऊपर अछि। आउ कोन फैक्ट आपनकर महानदी ऊपर आपनकर माने अछि को मते हीराकुद रिजर्वायर द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर ओडिसा जोटा कि आपनकर महानदी ऊपर अछि। क्लियर एतिके जिंस रिलेट करै परिबो। ब्राह्मणी के में कहू सेकंड हाईएस्ट रिवर ऑफ ओडिसा ताकू भी माने रखो दैट इज फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंसिंग द साउथ कोएल एंड द कोन शंख रिवर। वेदव्यासटी टोटल देखिबा 799 किलोमीटर आउट ऑफ दैट 480 किलोमीटर ओडिसा रे फ्लो हेसी। एटा को मन रखिथा एंड मन रखो ता ट्रिब्यूटरीज कोन कहबा ना तिकीरा हैला आपनकर समकोई हैला एउडा को हम कहि परिबा खरसुआ। डिस्ट्रीब्यूटरी जति कहबा खरसुआ हैला एंड ब्राह्मणी हैला ए सब आपनकर डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर पळेला। नेक्स्ट मते को बैतरणी जति बैतरणी को हम कहूचे सैक्रेड रिवर बोली हम जानिचे ओडिसा रो। बैतरणी को आमे जानिचे एज अ इंटरस्टेट रिवर एंड ए सैक्रेड रिवर ऑफ ओडिसा। हर नै म देखो दैट मीनिंग व्हाट ना दैट इंटरस्टेट मींस ये आपनकर बाहर ओरिजिन हे कि ओडिसा रे आपनकर स्टे सॉरी इंटरस्टेट माने ओडिसा रे ही ओरिजिन करी कि ओडिसा रे ही रहि जायछि। ओरिजिन कोठु हेछि गोनासिका गुप्त गंगा हर नै केउझर डिस्ट्रिक्ट और जदि लेंथ को वाला टोटल केते हबो 360 किलोमीटर लेंथ होची। तार ट्रिब्यूटरी हेले आपनकर सालंदी रिवर हैला तार सबुटु बड़ ट्रिब्यूटरी एंड मटाई रिवर हमें कहि परिबा। डिस्ट्रीब्यूटरी हेले बुढ़ा रिवर उटे आपनकर होची बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बैतरणी। क्लियर नेक्स्ट चलो आउ को रिवर रहि गेला ऋषिकुल्या विषय रे कोन कहितली साउदर्न बाउंड्री आपनकर बनौची ऋषिकुल्या। The river defines the southern coastal plain गंजाम प्लेन को आपनकर डिफाइन करूची। ऑलिव रेडेड डॉटर को आपन माने रिलेट करि परिबे ऋषिमाला पर्वत कोटो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट दारिंगबाड़ी पाखरु आपनकर ये बाहरी छी। लेंथ टोटल 165 किलोमीटर होची कहार ऋषिकुल्या रो। क्लियर एतिकी जिंस मन रहूची हम तो सबुठ स्मॉलेस्ट रिवर कहले बाहुडा रिवर याकू भी मन रखि था। ओके सुबर्ण रेखा हेले आपण मानकु नगरी सहित रिलेट करली यार आपनकर सेही 395 किलोमीटर यार लेंथ हबो। क्लियर नेक्स्ट जीवा आसो मते को व्हाट जियोग्राफिकल फीचर सेपरेट्स द मिडिल कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स इन ओडिशा। मिडिल कोस्टल रु नॉर्दर्न कोस्टल को आपनकर सेपरेट करिछि को फीचर द ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल और हिमालयस। Quick that is eastern ghat कोन हबो ना ईस्टर्न घाट आपनकर सेपरेट करिछि। वेरी गुड सो द ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इन ओडिशा and differentiate them from the middle mountainous region which inherently act as the physical separation between the northern and the middle section. After that, which rivers contribute to the formation of the middle coastal plains through alluvial deposits? Quick. कौन कहूच राइट आंसर कोडा हबो गंगा यमुना मिडिल। क्विक गंगेस एंड यमुना महानदी देखो जेते बेले ओडिसा कथा कहला मिडिल क्लास कथा कहला आपण मानकर वन एंड ओनली ब्राह्मणी ए सब को रिलेट करि परिबे। द मिडिल कोस्टल प्लेन रेफर्स टू द central part of the Odisha that is hexadeltaic region gift of the 6 rivers महानदी बैतरणी ब्राह्मणी ऋषिकुल्या आपनकर कोन आ बाकी रहिला महानदी भूली जाउची सुबर्ण रेखा राइट महानदी ब्राह्मणी बैतरणी ऋषिकुल्या सुबर्ण रेखा। टाइम केमती मोर वो प्रॉब्लम होची चलो नेक्स्ट आ गोटे कोन थिला रे रिवर तो ब्रेक हे गला आसा नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुआ गोटे मिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन को which part of the middle coastal plains is known for being the richest part of the whole state in terms of agriculture? सालंदी रिवर डेल्टा बैतरणी रिवर डेल्टा ब्राह्मणी रिवर महानदी जतले मिडिल कोस्टल प्लेन कथा कहिला राइट आंसर कोन हबा आपनकर क्विक बुढ़ा बळंग सॉरी पड़े गला which part of the middle coastal plain जते बेले टोटल आपनकर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हबो ओडिसा रे दैट इज सॉरी महानदी। क्लियर द Arable tract टोटल डिपेंड अपन आपनकर
कौन महानदी उपरे नेक्स्ट मते को हु इज फेमस temple is located in Puri, a city within the middle coastal plains in Odisha. तो राइट आंसर कौन हबो obviously पुरी कहला माने जगन्नाथ टेम्पल. अच्छा मते कहिला दी जण का ना त मन को कहितली स्टार्ट की करिथिले जगन्नाथ मंदिर आपनकर को 11th 12th 13 तीनटा सेंचुरी देली को सेंचुरी आपनकर स्टार्ट हेतिला एंड मते को आपनकर दी जण का नाम मु कहितली जे आपनकर राजा थिले जणे आरंभ करथिले जणे शेष करथिले मंदिर प्रतिष्ठा. राजा का नाम कोन अनंत बर्मन चोडगंग देव आपणकर शेष करी माने आरंभ करिथिले. अनंग भीम देव आपणकर एंड करिथिले. अनंग भीम देव एंड करिथिले. अनंत बर्मन चोडगंग देव आपणकर आरंभ करिथिले. सेटा कंफ्यूज जदी हबो एग्जाम रे हैरान हबो. अनंत कहिथिली अनंत रु अनंत जुग धरि के आपण माने फास्ट मन रखिबे हैला. किसे अनंग भीमदेव स्टार्ट लिखिलेनी श्रीकांत कुमार श्रीकांत महाराणा. अनंत बर्मन चोडगंग देव आपणकर स्टार्ट करिथिले. चोडगंग स्टार्ट अनंत लास्ट कौन मौसुमी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सो सन टेम्पल को आपण माने कोन रिलेट करूछंती ना ब्लैक पगोडा एंड जगन्नाथ टेम्पल आपनकर व्हाइट पगोडा एतिक रिलेट करिवो. सन टेम्पल का आपनकर किए सेम गंगा डायनास्टी रु गंगा वंश आपनकर किए ना तृतीय लांगुडा नरसिंह देव. लांगुडा नरसिंह देव कोन. अच्छा सन टेम्पल गोटे अलग लगी कोणार्क टेम्पल भी गोटे लगी बा चलो रिलेटेड. नेक्स्ट कहबो मते ना तो जगन्नाथ टेम्पल गला. देन व्हिच रिवर प्राइमरीली फॉर्म्स द साउदर्न कोस्टल प्लेन्स इन ऋषिकुल्या प्लेन्स इन ओडिशा. क्विक जल्दी को व्हाट विल बी द राइट आंसर. व्हिच रिवर प्राइमरीली फॉर्म्स द साउदर्न कोस्टल प्लेन्स और ऋषिकुल्या प्लेन्स इन ओडिशा. सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या महानदी और ब्राह्मणी. जेते बेले तमन को साउदर्न कथा कहिची वन एंड ओनली आपनकर ऋषिकुल्या रिवर आपनकर हेजिबो हला नै को कारण सुवर्णरेखा आपनकर रहिबनी. सुवर्णरेखा आपनकर नॉर्दर्न को पळेबो. महानदी सेंट्रल ले. ब्राह्मणी आपनकर ईस्ट वेस्ट कुडी की ये भी आपनकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न एपट को पळेबो आपनकर ब्राह्मणी हैला. तो रहिला की वन एंड ओनली साउदर्न ऋषिकुल्या. नेक्स्ट चलो मते को व्हाट इज द सॉल्ट ट्रैक्ट. सॉल्ट ट्रैक्ट माने कोन. This is a narrow belt of land along the coast that is covered with the tidal forest and contains saline soil. देखो salt tract माने मु तमन को कहिची one and only salt जो ऐड हेतिबा आपण मानकर कोन आसीबो ना obviously option A ही हबो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन मते को how wide is the salt tract along the कोन shore line in Odisha. ओडिसा रो shore line ने आपनकर टोटल सॉल्ट ट्रैक्ट रो लेंथ केते रहियो मते को 2.4 टू 5.8 किलोमीटर 4.8 टू 9.6 केते रहउची ऑप्शन ए बी सी डी. क्विक बी ए कोन आसुची ऑप्शन बी. तो 4.8 टू 9.6 किलोमीटर. नेक्स्ट मते को व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सॉल्ट ट्रैक्ट इन ओडिसास कोस्टल प्लेन्स. क्विक ओडिसा रो कोस्टल प्लेन नो टोटल सॉल्ट ट्रैक्ट हमें कोन कहू रिच एग्रीकल्चर लैंड. देखो सॉल्ट ट्रैक्ट से तो रिच हेई परिबनी. टाइडल फॉरेस्ट आपनकर हबनी ना तो टाइडल हेई परिबो. टाइडल हेई पारे. देयर इज आंसर्स. राइट आंसर आपनकर कोन आछि ऑप्शन बी की. यस. सो द सॉल्ट ट्रैक्ट देखो तो सॉल्ट ट्रैक्ट ऑफ ओडिसा इज अ नैरो कोस्टल बेल्ट आपण मानकर कोन आसुची ना सॉल्ट आसिला माने सुंदरबन को भी रिलेट करे दबो. नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन चैलेंज फेसिंग द सॉल्ट ट्रैक्ट इन ओडिसा. सॉल्ट ट्रैक्ट को मेन फेसिंग आपनकर ओडिसा रे कोन रहूची. क्विक soil erosion, salinization, deforestation or all of this. Obviously जेते बेले soil erosion रहूची and salinization रहूची deforestation को भी आपण माने ऐड कर देबे. तो ऑप्शन डी आपनकर राइट हे गेला. नेक्स्ट व्हाट इज द अनदर नेम. क्विक व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द सॉल्ट ट्रैक्ट इन महानदी डेल्टा रीजन. महानदी डेल्टा रीजन रे सॉल्ट ट्रैक्ट रो अदर नेम कोन. saline water. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसा भारी. What is the another name for the salt tract in the Mahanadi Delta region of the southern coastal? Quick. Little Sundarban. Asa. So the Mahanadi Delta region southern coastal plain Odisha आपनकर Little Sundarban बोली आपण माने
आराम से कहि पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच रिवर डेल्टा मार्क्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सॉल्ट ट्रैक्ट इन ओडिशा। नॉर्दर्न कथा कहिले आपण माने कोन आसीबे महानदी त नुह आपणकर ब्राह्मणी नुह ऋषिकुल्या नुह रहिछि कि सुवर्णरेखा तो सी सहित आपण माने जिबे नॉर्दर्न कथा जते बेले कहिला सुवर्णरेखा को रिलेट आपण माने करेइबे। सॉरी गला गोटे क्वेश्चंस मते को नेक्स्ट अरे आसी जा सॉरी तो गला आ कोन अछि sorry name the streams found in the salt tract which make it difficult to cross कौन रहिबो ना fast flowing fresh water streams no loss river valleys no तार कौन रहिबो ना sluggish and rocky streams तो option C the streams found in the salt tract that makes it difficult to cross are described as कौन innumerable sluggish and rocky streams and tidal creeks rather than specific name clear so again तम मानकु कहूची प्राइस ड्रॉप हो जाइछि 2000 सॉरी हां 2999 आपनकर प्राइस ड्रॉप हे कि रहिछि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस त आपन माने आराम से को चेक करि पारिबे। ऋषिकुल्या भूली जाइथिले थैंक यू दिव्यांशु आसो सिविल सर्विस रो प्राइस पे आपनकर ड्रॉप हे जाइछि जोटा कि प्री प्लस मेंस आपन माने 11999 ने पाउथले नाउ इट इज 9999 एंड आपनकर 6999 आपनकर 5499 संबलपुर ना झारसुगुड़ा बाघ झारसुगुड़ा नेक्स्ट सो टीचिंग एग्जाम कोन आसुची ना बैचेस आपण माने जानि सदी टीजीटी हैला जेटी हैला 1499 1299 हैला देन आपनकर जेटी 1199 999 है सॉरी 999 है जी देन टेलीग्राम चैनल को जॉइन हे जा एंड आपण मानु को एठी पीडीएफ मो शेयर करि देबी ठीक अछि डिनर फिनर सब करि के मु क्लास करूथि अच्छा सुदीप्ता जीके नेटवर्क माय पर्सनल इंस्टा अकाउंट आपण माने मते एठी भी कनेक्ट करि पारि थैंक यू सो मच हैव ए गुड नाइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रायोरिटाइज योर पेरेंट्स दिस वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी नो वन एल्स इन द वर्ल्ड थैंक यू सो मच हैव ए गुड नाइट बाय बाय थैंक यू चलो